Hello students, this video is for grade LKG. Let us start. This sheet is divided into three different parts in which we will get to know about three different subjects: English, Maths and EVS. So let us start with our first subject, which is of English. The question says, write the opposite for below words. In this question, we have to write the opposite words. In questions में हमें opposite word write करना है. Okay, means उल्टे words. जो भी word दिया है उसका उल्टा क्या होगा? Like hot मतलब गरम. गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा. Cold. Hot का opposite word cold. C-O-L-D. Cold. Opposite word for hot will be cold. Next word new. New मतलब नया. So इसका opposite word क्या होगा? Old means पुराना. O-L-D. Old. O-L-D. Old. Now the third one is long. L-O-N-G. long. Long मतलब लंबा. इसका opposite word क्या होगा? Short. S-H-O-R-T. Short. So in this way you will write opposite words, means उल्टे words. जो भी word दिए इनका उल्टा. Okay, opposite जो भी होगा वो आपको यहाँ पे write करना है. You will write the opposite for these words. So now see the next question. Circle all the letter A with red color. Okay, now what you have to do is you have to circle the letter A with red color. Red color से आपको सारे letter A को यहाँ पे circle करना है. Okay, in the second question of English, you will find out all the A's in the grid. इस यहाँ पे जितने भी letters दिए हैं इसमें जो भी letter A, जितने भी letter A दिए रहे हैं वो आपको red color से circle करने हैं. Understood? Yeah. So in this way you will complete English portion. Let us revise A to Z with one words. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for hen, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sun, T for tiger, U for umbrella,
V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yacht, Z for zebra. So we have read A to Z with one words. Now let us move to our next section, which is of maths. The question says, look at the pattern and draw two more to complete the pattern. In this, what you will do is, you will complete the pattern. आपको क्या करना है? पैटर्न को complete करना है. ओके, शुरू में जो 4 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, इसके बेस पे, इसी पैटर्न के बेस पे आपको नेक्स्ट के 2 डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, ऑन दैट सेम बेसिस. यू कैन सी इन द फर्स्ट वन. सबसे पहले 2 रेक्टेंगल्स दिए हुए हैं, 2 बॉक्सेस हैं, उसके बाद एक स्टार है, अगेन एक बॉक्स दिया है. उसके बाद अब क्या बनेगा? बॉक्स के बाद फिर से एक बॉक्स बनेगा. आफ्टर दैट वी विल मेक अगेन अ स्टार, सो दैट 2 बॉक्स 1 स्टार, 2 बॉक्स 1 स्टार. अंडरस्टूड? इट विल बी लाइक दिस. इसका जो पैटर्न है कैसे होगा? पहले 2 बॉक्स then 1 star, again 2 box, then 1 star. Understood? Yeah. Now see the next line. First is fish. पहली कौन सी पिक्चर है? फिश की है. नेक्स्ट 2 आर ऑफ एप्पल्स. उसके बाद जो 2 पिक्चर है वो किसकी है? एप्पल्स की. आफ्टर दैट अगेन 1 फिश. उसके बाद क्या है? 1 फिश है. इसके बाद कौन सी 2 पिक्चर्स बनेंगी? ऑफ कोर्स एप्पल्स विल बी. ओके, यहाँ पे 2 एप्पल्स बनेंगे. सो इसके पैटर्न कैसे हो जाएगा? 1 फिश 2 एप्पल्स, 1 फिश 2 एप्पल्स, 1 fish 2 apples, again 1 fish 2 apples. What you will draw? You will draw 2 apples in different boxes. See the third one. First picture is of heart, second is circle, again a heart and again a circle. अब थर्ड साइड क्या बनाएंगे? अगेन अ हार्ट एंड अगेन अ सर्कल. पहले हार्ट की पिक्चर है, फिर सर्कल है, फिर हार्ट है, फिर सर्कल है. अगेन वी विल मेक हार्ट देन सर्कल. अंडरस्टूड? So in this way you will complete the pattern by drawing 2 more diagrams. Understood? Yeah. Let us move to our last section, which is of EVS. Circle the flowers pictures. In this, 2 different pictures are given. 2 अलग पिक्चर्स दिए. एक तरफ एक तो एनिमल्स की पिक्चर है और दूसरी फ्लावर्स की पिक्चर है. इनमें से आपको जो भी फ्लावर्स दिखते हैं ना, उनको सर्कल करना है. What you will do is, you will circle the picture of flowers. जो भी फ्लावर्स की पिक्चर्स हैं उन्हें आपको सर्कल करना है. ओके, सो लेट मी टेल यू अ फ्यू फ्लावर्स नेम. मैं आपको कुछ फ्लावर्स के नेम बताती हूँ. यू विल लर्न देम. ओके, रोज, लोटस, लिली, marigold, jasmine. Repeat with me. Rose, lotus, lily, marigold, and the last one is marigold. Rose, lotus, lily, marigold and jasmine. Rose, lotus, lily, marigold and jasmine.
Rose, R-O-S-E, rose. Lotus, L-O-T-U-S, lotus. Lily, L-I-L-Y, lily. Marigold, M-A-R-I-G-O-L-D, marigold. And jasmine, J-A-S-M-I-N-E, jasmine. And one more you can learn, pansy, P-A-N-S-Y, pansy. So these were a few names of flowers. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.